Another most important theorem is theorem 10.11. The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Right? The sum of either pair of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. First of all, what is cyclic quadrilateral? Cyclic means in a circle, quadrilaterals a closed figure with 4 sides. मीन्स एक ऐसा चतुर्भुज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल, जो किसी सर्कल पे लाई करता हो, मीन्स उसके ऑल वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हो। तो यहां पे आप देख लीजिए 1 2 3 4, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल A B C and D. All the vertices A, vertices B, C vertex and D also lie on the circle. So this type of quadrilateral is called cyclic quadrilateral, right? We have to prove either pair of opposite angles. अब इसमें opposite angle कौन कौन से हो गए? A के साथ C हो गया और B के साथ D हो गया, तो ये opposite angle हो गए। तो इनमें से आइदर कोई सा भी, कौन सा भी अपोजिट एंगल का जो पेयर होगा उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। मीन्स वी हैव टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इज ऑल्सो 180 डिग्री, राइट? जस्ट कम टू गिवन। What is given? We have given that we have a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral ABCD. We have to prove angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle B plus angle D is also 180 degree. For this, come to the construction. If O is the center of this circle, O is the center of the circle, join DO and OB. Join OB, O to B and O to D means OD. Now come to proof. What is the value of angle C according to angle O? What is the relation of angle DCB according to DOB? Angle C is half of angle O, or we can say angle O is double of angle C. Angle O is double of angle C. Angle DOB is twice of angle DCB. Can you tell me the reason? Because angle O is at the center and angle C at the remaining part of the circle. By the theorem we have already studied, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle. किसी आर्क से सेंटर पर बनने वाला एंगल उसी आर्क से बाकी बचे हुए सर्कल पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। सो एंगल O इज ट्वाइस ऑफ और डबल ऑफ एंगल C. सिमिलरली एंगल A, व्हाट अबाउट एंगल A? एंगल A इज हाफ ऑफ दिस एंगल, और वी कैन से एंगल BOD, एंगल BOD इज डबल ऑफ एंगल A, राइट? एंगल BOD is double of angle BAD. Right? These are the full name of angle C and this is the full name of angle A. Right? Reason for both? What is the reason for both? Angle subtend at center and angle subtend at the remaining part of the circle. Write the reason. Angle subtend by an arc at center and angle subtend at remaining part of the circle.
right? That this is equation number 1 and this is equation number 2. If we add both, add, so angle DOB प्लस एंगल BOD, जब हम इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी. सो दिस इज BOD, राइट? तो इनकी राइट साइड क्या हो जाएगी? 2 एंगल DCB प्लस 2 एंगल BAD, राइट? क्लियर? Add the both angle according to figure. Now see in the figure, angle DOB plus BOD. What is the value of both angle? This is 360 degree. This is the complete revolution. This is the complete angle. So the value of this is 360 degree. You can have angle 2 as common. So angle DCB plus angle BAD. So 360 degree is equal to twice of angle DCB plus BAD. DCB angle is for C angle and BAD angle is for angle A. So we can write 360 degree is equal to twice of angle C and twice of angle A, and 2 is common, so twice of C and A. 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, so 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल A. ये कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री, एंगल C प्लस एंगल A. अगर हम इनको प्रॉपर लिख देंगे तो हमें मिलेगा एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रूव हो गया है. Now we have to prove angle B plus D is also 180 degree. We know that angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree, right? This sum of 4 angle of a quadrilateral by the angle sum property of a quadrilateral. Quadrilateral के सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है. Now write is like this, angle A plus angle C, angle B plus angle D. This is 360 डिग्री. यहाँ पे हमने क्या किया? A के साथ C को ऐड कर दिया और B के साथ D को ऐड कर दिया. The value of A plus C from this is 180 डिग्री plus angle B plus angle D is equal to 360 degree. So angle B plus angle D is equal to 360. 180 ट्रांसपोज होके माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा. So this is angle V plus angle D is also 360 minus 180 degree. So from there we can conclude the opposite angle of cyclic quadrilateral. The sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 degree.